So students, class 11, subject chemistry and unit first. Today's topic is scientific notation and significant figures. So first of all, we will study about the scientific notation. What is scientific notation? This is a method to write the figure of any measurement in which a decimal is placed just after first non-zero number. It means इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसी मेथड है जिसमें किसी मेजरमेंट के फिगर्स में एक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स के बाद डेसिमल रखा जाता है. फॉर एग्जांपल, सपोज अ मेजरमेंट figure of a measurement is 267. Now, in order to write it in scientific notation, we will place a decimal at this point just after first non-zero digit. So this will be 2.67 into 100 or 2.67 into 10 to the power 2. So this is the figure in scientific notation. Means a decimal is placed just after first non-zero digit. In order to do so, we usually place or shift the decimal either on left side or on right side. When we shift the decimal on left side, we raise the power in minus, power in plus on 10, and if we shift the zero toward right direction, we place the power on power with negative sign on 10. Means जब हम डेसिमल को लेफ्ट डायरेक्शन में खिसकाते हैं तो 10 की पावर में उतना ही पॉजिटिव में फिगर आते हैं, और डेसिमल को हम जितने डिजिट राइट खिसकाते हैं 10 की पावर में उतने ही नेगेटिव नंबर आती है. जैसे 462.31. इस फिगर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो यहाँ हम डेसिमल को जस्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मीन्स 4 के बाद लिखना है. सो आंसर विल बी 4.6231 into 10 to the power. यहाँ डेसिमल को 2 डिजिट पीछे खिसकाया गया है, इसलिए दिस विल बी 10 to the power 2. अब देखिए 0.006305. इस फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. इसमें हमको डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है, इसलिए डेसिमल को 1 2 3 फिगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं. आंसर होगा 6.305 into 10 to the power 123 minus 3. Since the decimal is being shifted here 3 digit right, therefore power is being taken in the form of negative. So this is the scientific notation. Some other examples are 462 into 10 to the power minus 6. We have to write it in scientific notation. If there is no decimal in a number, as we assume the decimal at the last. So here we will assume that decimal is here, and we are shifting the decimal here to here just after first non-zero digit. So it will be 4.62 into, since because of this 10 to the power 2, because 0 is being shifted here 2 digit left, that's why 10 to the power 2, and this is 10 to the power minus 6. So the answer will be 4.62 into 10 to the power minus 4. So this is the
scientific notation. Now we will study about significant figures. So what is the significant figure? So figures are numbers required to express the any measurement with complete accuracy. Figures are digits required to express a measurement with complete accuracy are called significant figures. Rules to determine significant figure. Number 1, all non-zero numbers are significant figures. For example, 634. Here, 3 significant figures are there because all are non-zero. 3 significant figures. Number 2, 0 between 2 non-zero is significant figure. Is significant figure. For example, 3604. How many significant figures are there? 4. Because 0 is here between 2 non-zero. So it will be counted as significant figure. So there are 4 significant figures. Third is initial 0. Initial 0 are zeros, means just before a non-zero, never a significant figure. Example, 0.0062. Here, these zeros are initial zeros and cannot be counted as significant figures. So, here, number of significant figure is 2. Number 4, last 0 may or may not be. May or may not. This is conditional. If the last 0 is after the decimal, it is counted as significant figure. For example, 1.000. Here 0 are after the decimal, therefore these are counted as significant figure, and here the number of significant figure is 4. But in case of 1000 means 1000, so zeros are not just after the decimal, so these are not counted as significant figure, and here the number of significant figure is 1. So 0 if present after the decimal, counted as significant figure, and if there is no decimal in the figure, last 0 are not counted as significant figure. अगर 0 डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे, और अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाएंगे. लास्ट वाले 0, बीच के 0 काउंट किए जाएंगे. मीन्स 10200. Here this 0 will be counted as significant figure, but these not. So number of significant figure are 3. So these are the rules governing the significant figure. So fifth, there is no effect on significant figure of 10 power x. Whatever x is there. So for example, 4.620 into 10 to the power 6. How many significant figures are there? So there is no effect on significant figure of this 10 to the power 6. So total number of significant figure are 1, 2, 3, 4. So 4 significant figures are here.
significant figures are also counted in addition and subtraction, similarly in multiplication and in division. So in addition and subtraction, suppose we are adding the two numbers like 18.62 and 4.2. We are adding these numbers. So total is 2822, 22.82. But according to significant figure, जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जिस एडिशन करने वाली या सब्सट्रैक्शन करने वाली जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो उस नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट होगा 22.8 बिकॉज कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली नंबर में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, इसीलिए रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेम रूल इज ओबेड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, whereas मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल इज समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हम इन दो फिगर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको रिजल्ट सपोज ये मिल रहा है, ऑल्दो दिस रिजल्ट इज नॉट करेक्ट बट सपोज अगर ये रिजल्ट मिल रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अगेन लिसन, मल्टीप्लाइंग या डिवाइड करने वाले नंबर्स में कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एज यू सी हियर दैट दिस नंबर इज लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट कंटेन्स 3 significant figures, therefore the answers should also be reported up to 3 significant figures. So we have to remove this 1, there is no effect on 7, when 7 is removed it becomes 3, when this 3 is removed it remains 3. So the result according to significant figure is 56.3 with 3 significant figures because this number also contains 3 significant figures. So this is all about the significant figures.